how to multiply, how to divide, okay? And then we got introduced to complex function. And that is all that we saw. That was the scope, that is all we saw in the semester one. Okay, now in this semester, we are going to take it forward from there and we are going to see calculus of complex function. Now, when I say calculus of complex function, I mean derivative and integration of complex function. Okay, so now here in this semester specifically we'll be seeing concepts related to derivative, and then for integration it is there in your next semester, that is complex integration, integration of complex function. Okay, so this semester we are only focusing on concepts related to differentiation. Okay, so just before beginning with that, let us have a quick recap of the basics of complex function. So first thing that we saw is a complex number. Now what is a complex number? We have seen that a number of the form a plus bi, where a and b are real numbers and I is the imaginary unit under root of minus 1. This is called as a complex number. It is denoted by the variable z. Okay, so this is how a complex number looks like. Now here this a is the real part of the complex number and this b is the imaginary part of the complex number. Okay, so these are the terminologies we have seen. Few examples: z equal to 2 plus 3i is a complex number. Here 2 is the real part and 3 is the imaginary part. The part or the number which is multiplied with I, that is called as the imaginary part along with the sign. So here the imaginary part is plus 3. The other one, that is the part which is not multiplied with I, that is the real part along with the sign. So here this is 2. 2 is the real part. Okay. Next, z equal to minus root 3 plus I. Here the real part is minus root 3 and the imaginary part is 1. Next, let us see z equal to 1. This is also a complex number which can be written as 1 plus 0i. So here the real part is 1 and the imaginary part is 0. Okay. So whenever a complex number has imaginary part 0, it is a real number. Real numbers, the set of real numbers is a subset of the set of complex numbers. Correct? Okay. Let us see the next example. Z equal to minus 5i. This can be written as 0 minus 5i. Here the real part is 0 and the imaginary part is minus 5. So this is also a complex number. Any complex number where the real part is 0 is also called as an imaginary number. The set of imaginary numbers is a subset of set of complex numbers. Okay, okay, these are all the things which we have seen. So this is all about complex numbers. Okay, next we saw complex variable. Okay, from numbers we see variables. Now what is a complex variable? Z equal to x plus yi. This was our famous expression for complex variable. For numbers we use a and b, and for variable we use x and y. This is the commonly used terminology or notation. There is no hard and fast rule that you have to use these only. Okay, so here x is a real variable and y is also a real variable. So x plus iy, this is a complex variable. So here x can take any value, y can take any value. Okay, the moment x takes a particular value and y takes a particular value, it becomes a complex number. Okay, next from complex variable we see what is a complex function. Okay, we have this complex variable z. Using this variable we form function. So that is called as a complex function. So how does this complex function look like? It is denoted by f of z, that is function of z. Now this z being a complex variable, when we use this variable to form a function, okay, the function is complex. The function is complex means what? It means that it has a real part and it has an imaginary part.
So this is represented as u plus vi. Now here u is a function, okay, v is a function. Now u is a function of which variable? U is a function of x and y, because z involves x and y. We are talking about function of z. U is a variable in x and y. V is also a variable in x and y. Okay, so here u and v are functions in x and y. U is the real part of f of z. V is the imaginary part of f of z. So we have seen this type of complex function. Okay, so in this topic also we will be dealing with complex functions only. So we'll see examples of these functions as we are doing the chapter. So that is why I have not taken any specific examples over here. Now another notation for complex function is W. Okay, like we have in real functions, the one of the notation is f of x, and sometimes we use the variable y to denote the function of x, that is y equal to f of x. Okay, so similarly here, function of z we can denote it by f of z. So it is like f means function of z, or we can use a single variable to denote that function also. In complex function, the most commonly used variable to denote the complex function is w. Okay, so this is what we have seen about complex function. Now just before going to the next, this one, we have got 5 types of functions, that is algebraic, trigonometric, inverse trigonometric, logarithmic, and exponential. We have seen all these 5 types of functions in semester 1, and we have seen how to get their real and imaginary parts. Okay, like algebraic means, for example, z square. So z square is an algebraic function. How do we get the real and imaginary part? We put z equal to x plus iy and then use binomial expansion and then get the real and imaginary part. Trigonometric, for example, sine z. How do we get the real and imaginary part of sine z? We write z as x plus iy. So sine of x plus iy, then we use sine of a plus b formula and then simplify it and get the real and imaginary part. Inverse trigonometric, we have not seen the real and imaginary part of inverse trigonometric in semester 1, so we will not be dealing with inverse trigonometric function also much in this topic as well. Next, logarithmic function, log of x plus iy. How do we get the log of z? How do we get the real and imaginary part of this? We write it in the polar form, log of r e raised to I theta, and then we get the real and imaginary part of log z function. Okay, and finally exponential function, e raised to z, we write z as x plus iy and then we separate it, e raised to x into e raised to iy, use Euler's formula and get the real and imaginary part of exponential function of z also. Okay, so we know how to get the real and imaginary part of all the different types of complex function we have. Okay, so that is the basics we need for this particular topic. Okay, having understood this, now we move on. Now what is analytic function? Okay, now here this is a new terminology, analytic function. Now this is a concept which is related to the differentiability of a complex function. Okay, what do we mean by differentiability? If we have a function, say f of z, its derivative f dash z, if it exists at z, it is said to be differentiable. Okay, like for example, if we have a function f of z equal to sine z, what is the derivative of sine z? Cos z, correct. Does it exist for all value of z? Does cos z exist for all values of z? Yes. Okay. So derivative of sine z exists at z. Okay. For example, let me give you a specific value of z. Say z equals to 0. At z equal to 0, derivative of sine z is cos z at 0.
Now cos z at 0 is cos 0 and cos 0 is 1, which exists. Correct? No, it is not infinite, it is a finite number. So the derivative of sine z exists at z equal to 0. Okay, so this is the meaning of existence. Can you give me one example of a function whose derivative does not exist at a point? Anyone remembers this example? Anyone from division B? Okay, let us take this example 1 upon z. Okay, if I want to know whether the derivative of 1 upon z exists at z equal to 1, how do I check that? We find the derivative of 1 upon z. What is derivative of 1 upon z? Minus 1 upon z square, correct. Now what is the value of minus 1 upon z square at z equal to 1? The value of minus 1, it is minus 1, correct. It exists, isn't it? So the derivative of 1 upon z exists at z equal to 1. That means 1 upon z is differentiable at z equal to 1. Okay. Is there any value of z for which the derivative does not exist? The derivative of 1 upon z does not exist? 0. Excellent, Paresh. What happens when you put z equal to 0? In the derivative minus 1 upon z square, it becomes infinite. Okay. So the derivative of 1 upon z does not exist at z equal to 0. So that means f of z is not differentiable at z equal to 0. Okay, understood the concept of differentiable and not differentiable? This is at a point. Okay, so let me just denote this here. Here you have this point and we are calling this point at z. So at this point, if the derivative f dash of z exists, then the function f of z is said to be differentiable at this point z. Okay, all right. So that is what all about derivative and differentiability. We come to this word now, analytic. ये analytic क्या है? This is a concept which is a little bit higher or advanced than differentiability. Okay, let's read the second line. F dash z exists at z and at all the points in the neighborhood of z. Then we say f dash of z is analytic at z. Okay, means if a function, oh so sorry, it should be f dash of z, f of z. 1 minute. Huh? Yeah. Yeah. So when do we say f of z is analytic at z? F of z is analytic at z if the derivative exists at z and all the points in the neighborhood of z. Okay, so neighborhood of z matlab z के आजू बाजू का points. Z के आजू बाजू का points means, see, this is called as neighborhood. Neighborhood means the points surrounding these points z. So mathematically speaking, neighborhood involves the set of all points in a very small circle with center as this z, and radius can be any radius. Okay, however small radius you choose, when you draw a circle around this point z and you choose a very small radius, even that small circle, that is the small neighborhood, will consist of infinite number of points. Correct? No, so those are the points in the neighborhood of z. I have just drawn a big circle for the visibility, but you can choose any small circle you want. Okay,
So that would be the neighborhood. It could be a big neighborhood, it could be a small neighborhood. So function f of z is said to be analytic if this derivative exists at point z as well as at all the points around z. Okay, so it becomes a very it becomes a more general concept. Okay, so then we say it is analytic. Did we understand the meaning of analytic function? Okay, it's simple, right? Okay, this is analytic function at one point z. Then there is one more concept, that is a function being analytic in a region. So you can have a region R, any shape. I have just used one shape from PowerPoint shapes. Okay, it could be any shape ka region. A complex function f of z is said to be analytic in region R if f of z is analytic at each and every point in the region. Here we have understood what is the meaning of a function being analytic at a point. Okay, a function is analytic at a point if derivative exists at this point and in all the neighboring points. Then it is analytic at this point only, not in the remaining points. If you want to check at any other point, then वो point को center लेके उसका neighborhood draw करना पड़ेगा. अभी ये center है z, तो यहाँ पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और इसके आसपास के पॉइंट्स में भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, आसपास के सारे पॉइंट्स में डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो ये पॉइंट पे एनालिटिक है ऐसा बोल सकते हैं. सो ऐसा इफ वी टेक ईच एंड एवरी पॉइंट इन दिस रीजन and we check for and we come to know that the function is analytic at each and every point in this region, then we say that the function is analytic in this region. Okay, so the concept is very simple, but do we understand the difficulty in checking whether a function is analytic or not? Okay, अगर definition use करके अगर आपको check करना है, even at a point check करना है, even if you want to check whether the function is analytic at a point or not, it involves finding the derivative of the function and checking whether the derivative exists at infinite number of points. Okay, so that is a very very tedious procedure. तो अगर हमको चेक करना है कि कोई फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, तो डेफिनेशन यूज करेंगे तो ये बहुत ही लेंदी हो रहा है. सो वी नीड एन ऑल्टरनेट मेथड जो हम प्रैक्टिकली यूज कर सके कोई फंक्शन एनालिटिक है या नहीं ये चेक करने के लिए. एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ, हाउ टू चेक इफ अ गिवन फंक्शन इज एनालिटिक. तो उसके लिए एक चेकिंग क्राइटेरिया है. लेट अस सी दैट f of z equal to u plus iv is said to be analytic if it satisfies the following two conditions. Okay, first condition क्या है? First condition is a set of two equations which is called as Cauchy-Riemann equations. These two mathematicians have contributed to this equation, so it is called as Cauchy-Riemann equations. It should be satisfied. Now what is Cauchy-Riemann equation? It says partial derivative of u with respect to x should be equal to partial derivative of v with respect to y. Now this ux is the notation for derivative. Why is it partial derivative with respect to x? Because u is a function of x and y. When you are differentiating u with respect to x, you are going to treat y as constant. Similarly, ये जो है vy, it is a notation for derivative of v with respect to y. V is a function of x and y. So when you are differentiating v with respect to y, you are going to keep x as a constant. So this is partial derivative. So these two should be same, and uy should be equal to minus vx, that is partial derivative of u with respect to y should be equal to minus partial derivative of v with respect to x. So these two equations should be satisfied. This is called as Cauchy-Riemann equations. That is the first one. And the second condition is all these four partial derivatives which we have found out. Okay, partial derivative of u with respect to x, partial derivative of u with respect to y, partial derivative of v with respect to x, partial derivative of v with respect to y. ये चारों partial derivatives जो है ये continuous होने चाहिए. Okay, so if these two conditions are satisfied, then we can say that the function is analytic. यहाँ पर हमने जो भी condition देखा है, it is in terms of the variables x and y. So this is called as this is in the Cartesian form.
Okay. Now similarly, we can check out these conditions in the polar form as well. Polar form में polar variables r and theta will be used. So if we have this function f of z equal to u plus iv expressed in the polar form, it is said to be analytic if two conditions are satisfied. The first condition is Cauchy-Riemann equation should be satisfied. The Cauchy-Riemann equation in the polar form is ur is equal to v theta upon r and u theta upon r is equal to minus vr. Okay, so this is Cauchy-Riemann equations in the polar form. Ur means partial derivative of u with respect to r, v theta means partial derivative of v with respect to theta, u theta means partial derivative of u with respect to theta, and vr means partial derivative of v with respect to r. Okay, and the second condition is all these four partial derivatives, that is partial derivatives of u and v with respect to r and theta, should be continuous. These are the conditions in the polar form. This is just the criteria to check whether a function is analytic or not. So here we have to remember these two conditions and we have to remember the Cauchy-Riemann equations. Did we understand till here? ये टक 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 कौन कर रहा है? Did we understand these conditions? Okay. As you can see, अभी ये दो कंडीशन में से हमारे सिलेबस में जो प्रॉब्लम्स आएंगे, ये सेकेंड कंडीशन बाय डिफॉल्ट satisfied रहेगा. Okay, I will show you that. Okay, ये we don't have to check anything for continuity. The first condition is something where the calculation is involved. इसके partial derivatives find out करने हैं और ये condition satisfy हो रहा है क्या check करना है. So most of the this thing, the checking involves or revolves around the Cauchy-Riemann equations. तो ये Cauchy-Riemann equations को याद रखना बहुत important है. We have to remember the Cauchy-Riemann equations. So let us see how we can remember the Cauchy-Riemann equations. सबसे पहले इसका कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं. कार्टेशियन फॉर्म क्या है? ux equal to vy and uy equal to minus vx. Now I'm going to tell you how we can remember it. ये हमने u और v, ओके, अल्फाबेट्स, अपने अल्फाबेट्स में जिस ऑर्डर में आता है, पहले फंक्शन का रियल और इमेजिनरी पार्ट लिख दिया, उसके नीचे हम व्हाट हैपेंड, 1 मिनट, या उसके नीचे अपना जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिख दिया, x एंड y. ओके, देन इफ इसको ऐसे लेना है स्ट्रेट, अगर आपने डिफरेंशिएट किया u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, you get ux. V का derivative with respect to y, that is vy, then they are equal, they have to be equal. Okay, u का derivative with respect to x, सीधा सीधा v का derivative with respect to y, तो इन दोनों को सेम रहना है. अगर ऐसे क्रॉस डेरिवेटिव लिया, u का derivative with respect to y and v का derivative with respect to x, then they are negatives of each other. This is one way of remembering it. Okay, I repeat, स्ट्रेट डेरिवेटिव लिया, पहले u v x y इस ऑर्डर में लिख दिया, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, ऐसा सीधा सीधा डेरिवेटिव लिया तो दे हैव टू बी इक्वल. ऐसे क्रॉस डेरिवेटिव लिया, मतलब u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y और v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, देन दे हैव टू बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर. ओके, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म का Cauchy-Riemann equations. Similarly, let us see the Cauchy-Riemann equations in the polar form. In polar form, this is the Cauchy-Riemann equations. Let us see how to remember it. Again, we write u, v and x and r and theta. Okay, यहाँ पर first condition, u को with respect to r सीधा सीधा differentiate करो, ये देखो u r मिला, v को with respect to theta सीधा सीधा differentiate करो, v theta मिला, then ur and v theta will be same. इन पोलर फॉर्म एक ही बात एक्स्ट्रा है कि जिस साइड में, व्हेन आई से जिस साइड, आई मीन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. ओके, तो यहाँ जिस साइड में आपको r दिखाई नहीं देगा तो आपको r से डिवाइड करना है. आई एम जस्ट टेलिंग यू अ वे टू रिमेम्बर इट. ओके, नाउ व्हेन वी से u r इक्वल टू v थीटा,
जैसे कार्टेशियन में तो सीधा सीधा किया था, ux इक्वल टू वी वाई, दैट्स इट, फुल स्टॉप. ओके, पोलर फॉर्म में थोड़ा अलग है. व्हेन वी से यू आर इक्वल टू वी थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड में यू आर, इसमें आर दिखाई दे रहा है. ओके, बट राइट हैंड साइड में वी थीटा, आर दिखाई नहीं दे रहा है. सो यू हैव टू डिवाइड बाय आर. So that is how we get v theta upon r. Okay, so this is a way to remember this. Let's look at the next one. जब हम क्रॉस डेरिवेटिव लेंगे u theta and vr, then they are negatives of each other. So when we take u theta, यहाँ पर कहीं भी r दिखाई नहीं दे रहा है, तो you have to divide that side by r. So u theta upon r equals to minus vr. This is Cauchy-Riemann equations in the polar form. Have we understood how to remember Cauchy-Riemann equations? Have we understood how to remember Cauchy-Riemann equations? Did you switch off that? Polar form you want me to explain again? Okay, 1 minute. Is the presentation visible to all? Someone is doing one clicking sound. कहीं से तो एक clicking sound आ रहा है. Please सब अपना ये जो है mute में रख दे. Okay, and when you want to ask a question, please unmute it. Okay. All of you are able to see the presentation? Yes, okay. Acha, Prashant, I'm going to explain the polar form to you. Okay. First equation, Cauchy-Riemann equations का first equation, u v r theta हमने इस form में लिख दिया. I again repeat this. Okay. u v r theta ऐसे लिख दिया. When you differentiate directly, that is u with respect to r and v with respect to theta, they have to be equal without any negative sign involved. Correct, no? डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो कोई नेगेटिव साइन नहीं है. बट पोलर फॉर्म में क्या होता है, आर जो वेरिएबल है ना अपना आर, दिस वेरिएबल वांट्स टू बी देयर एवरीवेयर, उसको हर जगह पे दिखाई देना है. तो व्हेन यू राइट यू आर इक्वल्स टू वी थीटा, लेफ्ट हैंड साइड में यू आर दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड में नहीं दिखाई दे रहा है. ओके, तो वहां पे आपको आर से डिवाइड करना है. सो इट इज वी थीटा अपॉन आर. So the first equation becomes u r equal to v theta upon r. That is the first equation. Second equation कैसे मिलता है, we differentiate, ऐसे cross differentiation कर रहे हैं. Derivative of u with respect to theta and derivative of v with respect to r. So when you write u theta, यहाँ पर कोई r दिखाई नहीं दे रहा है, u दिखाई दे रहा है, थीटा दिखाई दे रहा है, r दिखाई नहीं दे रहा है. तो यहाँ पर u थीटा को r से डिवाइड करना है. सो u थीटा अपॉन r इक्वल टू माइनस वी आर. यहाँ पर r दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर कुछ भी डिवाइड नहीं करना है. दिस इज जस्ट अ वे टू remember it. Okay, so Cauchy-Riemann equations in the polar form is u r equal to v theta upon r, and the second equation is u theta upon r equal to minus vr. Did we understand the Cauchy-Riemann equations now? Yes, Prashant? Okay, so now using this concept we'll be seeing our problems. Okay, we come to the first type of problem, type 1 problem. The type 1 problem is where you are given a complex function. The complex function can be given in terms of z, that is it can be given as a function of z, or it can be given as a function of x and y also. It can be given in either form. Okay, so function of z matlab say z square is a function of z. Function of x, y, x and y, it could be like x square plus 2i y. So that is a complex function because I is present over there, matlab real part or imaginary part hai, and it is in terms of x and y. What we have to do is
we have to show that the function is analytic. Okay, ये जो problem है ये usually आपके question number 1 में आता है for 5 marks, where we have to show the function is analytic. Okay, and the second thing which we are going to show here is, which we may be asked is to find f dash of z. This is optional. It is asked sometimes, sometimes it is not asked. Okay, so we will see both how to show that the function is analytic and how to find the derivative of the function. Let's take this question. Prove that f of z equal to x cube minus 3xy square plus 2xy plus I into 3x square y minus x square plus y square minus y cube is analytic, and find f dash of z in terms of z. ओके, तो ये क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया है f of z. इट इज This is a function of z, that is it is a function of a complex variable. It is expressed in terms of x and y. I present है इसलिए पता है कि this is a complex function. We have to prove that it is analytic. That is the first thing we have to do. And second thing, we have to find f dash of z. सिर्फ उतना ही नहीं बोला है. We have been asked to find f dash of z in terms of z. Okay. So let us see this. Let us see the first one. We write down our f of z. ये हमने f of z को लिख दिया. Okay. So this is in terms of x and y, कार्टेशियन फॉर्म. तो फंक्शन एनालिटिक है ये प्रूव करने के लिए कौन से दो कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन है वी हैव टू शो दैट दिस फंक्शन सैटिस्फाइज कॉशी-रीमान इक्वेशंस इन द कार्टेशियन फॉर्म. सेकेंड कंडीशन है पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ u and v should be continuous. Okay, so for Cauchy-Riemann equations as well as for the second condition we need the functions u and v. u is the real part and v is the imaginary part of f of z. तो पहले इनको ढूंढते हैं. तो comparing the given function with f of z equal to u plus iv, we get u is the real part, that is the part which does not contain I. It is x cube minus 3xy square plus 2xy, and v is the imaginary part, the part which is multiplied with I. It is 3x square y minus x square plus y square minus y cube. So this is the first thing we do. We get the real part and the imaginary part of the given function. Once we get the real and the imaginary part, we find their partial derivatives. तो सबसे पहले u का partial derivative with respect to x find out करते हैं. Okay? तो ये हमें f of z analytic prove करने के काम आएगा. That is, we have to prove that the Cauchy-Riemann equations are satisfied. Okay. तो u को ले लिया. सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव. तो जहां जहां u में x का टर्म है दैट विल गेट डिफरेंशिएटेड, एंड जो y वाला टर्म है इट विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट. इट इज पार्शियल डेरिवेटिव. तो x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, x का डेरिवेटिव 1, y स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज, प्लस 2 एज इट इज, x का derivative 1 and y will remain as it is. Okay, so this is how we take the derivative. इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं. So we get derivative of u with respect to x is 3x square minus 3y square plus 2y. So we got derivative of u with respect to x. हमें ये चारों partial derivatives find out करने, right? So this is the partial derivative of u with respect to x. Next we find out partial derivative of u with respect to y. अब क्या होगा? सारे y के टर्म्स जहां जहां है those will get differentiated, x will be treated as a constant. So when you differentiate u with respect to y, you get uy. यहाँ पर कोई भी y का टर्म दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब this entire thing is a constant. Derivative of a constant is 0. So इसका derivative 0 आया. Minus 3 will remain as it is, x will remain as it is, y square का derivative है 2y. Okay, plus 2 will remain as it is, x will remain as it is, y का derivative है 1. Okay, so this is how we take the derivative. We'll write it a bit properly. So we get uy equal to this, when you multiply 3 2s are 6, so we get minus 6xy plus 2x. So we got partial derivative of u with respect to y. What else is remaining? Partial derivative of v with respect to x,
and partial derivative of v with respect to y. Okay, so next let us take v equal to 3x square y minus x square plus y square minus y cube. So we differentiate v with respect to x. So 3 as it is, x square का derivative is 2x, y as it is minus x square का derivative 2x plus no x का terms here. So this is a constant with respect to x. So इसका derivative 0 minus here we have y cube. यहाँ पर भी कोई x का term नहीं है. So इसका derivative with respect to x will be 0. We write it properly. 3 2s are 6xy minus 2x. Okay. So this is our derivative of v with respect to x. We take v again and now we differentiate it with respect to y. So derivative of v with respect to y is 3 as it is, x square as it is, y का derivative 1 with respect to y differentiate करना है. Minus यहाँ पर कोई y नहीं दिखाई दे रहा है. Hello, am I audible? Okay, मेरा आवाज क्लियरली आ रहा है? भरत, मेरा आवाज ठीक से आ रहा है? अमन नहीं आ रहा है ठीक से. My voice is breaking. 1 minute, let me just check the net connection. Hello, hello, is it clear now? क्लियर है? ब्रेक हो रहा है? क्लियर है अभी? ओके ओके, ऑल राइट, या लेट्स कंटिन्यू. तो ये प्लस वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव वेयर वाज आई, सॉरी मैं भूल गई कहाँ थी. तो आई विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर. तो वी आर डिफरेंशिएटिंग v विथ रिस्पेक्ट टू y. सो दिस इज इक्वल टू 3 एज इट इज, x स्क्वेयर एज इट इज, y का डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस x स्क्वेयर. यहाँ पर कोई y दिखाई नहीं दे रहा है. सो as far as y is concerned this is constant, तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा. प्लस y स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y माइनस y क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3y स्क्वेयर. ओके, तो डेरिवेटिव लिख दिया. इसको अब थोड़ा ठीक से लिखते हैं. सो वी गेट vy इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस 2y माइनस 3y स्क्वेयर. तो ये हमारा चौथा पार्शियल डेरिवेटिव vy भी आ गया. ओके, सो नाउ we have to check whether this condition is satisfied or not. All right, so you can check here ux we have to check with vy. ये देखो ux में पहला टर्म क्या है, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y. तो ux is equal to vy. Okay, let us check uy and vx now. uy and vx should be negative of each other. मतलब सारे टर्म्स होने चाहिए, सिर्फ उनके साइंस ऑपोजिट रहने चाहिए. तो लेट्स चेक uy. वी हैव माइनस 6xy हियर एंड हियर वी हैव प्लस 6xy. ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव्स है. प्लस 2x, यहाँ पर माइनस 2x नेगेटिव्स है. दैट मीन्स uy इज नेगेटिव ऑफ vx. मतलब ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है. सो हेंस f of z satisfies CR equation. CR is the abbreviation used for Cauchy-Riemann equations. Okay, तो अपना फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया. नेक्स्ट कंडीशन ux, uy, vx, vy आर कंटिन्यूस. इसमें आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट राइट इट एज इट इज. हमारे जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है, चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स, आर देयर एनी पार्शियल डेरिवेटिव्स जहां पे डिनोमिनेटर बिकम्स 0 at any point? यहाँ पर कोई all the denominators are 1. Okay, so this would be continuous. The four partial derivatives are continuous. So from this we can conclude that f of z is analytic. So if you are given a function of x and y, this is how we show that the function is analytic. Did we understand this? All of you have understood this properly? Okay, so this was the first part जहां हमें प्रूव करना था कि फंक्शन एनालिटिक है. Now we come to the second part. Okay, second part is
एफ डैश जेड फाइंड आउट करना है। ये एफ डैश जेड हमें ऐसे इजी लगता है, इसमें हमें लगता है इसमें क्या बात है। सी बट फंक्शन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई ना। अगर आपको साइन जेड बोलेंगे, इट इज अ फंक्शन इन जेड, उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड इजी होता है। बट व्हेन वी आर फाइंडिंग द डेरिवेटिव of a function given in terms of x and y and we are finding the derivative with respect to z, वो कैसे करना है। now let us see that to find f dash z in terms of z, तो f dash z का एक फॉर्मूला है। तो the formula is it is ux plus I vx. दिस इज अ फिक्स्ड फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x है, v विथ रिस्पेक्ट टू x है, ये डेरिवेटिव को आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे uy लिखा तो ये vy आएगा, ऐसा नहीं है। दिस इज अ फिक्स्ड डेफिनेशन और अ फॉर्मूला। सो f डैश z का फॉर्मूला है ux प्लस I vx। अब इस सॉल्यूशन में हमने ux और vx फाइंड आउट किया है, वो हम सब्सटीट्यूट करेंगे। तो वी गेट f डैश z इक्वल टू, अपना ux था 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y। ओके, तो ये सब्सटीट्यूट किया, प्लस i टाइम्स vx था 6xy माइनस 2x, ये भी सब्सटीट्यूट किया। अब हमें मिल गया f डैश ऑफ z। ओके, बट दिस f डैश ऑफ z इज इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल्स x एंड y। हमें एफ डैश जेड किस टर्म्स में चाहिए, जेड के टर्म्स में चाहिए। यूजुअली इवन इफ दे डोंट मेंशन इन टर्म्स ऑफ जेड, यू हैव टू रिमेंबर दैट एफ डैश जेड हैज टू बी ऑब्टेन्ड इन टर्म्स ऑफ जेड। अभी वो कैसे करें, उसके लिए वी हैव अ रूल टू गेट एफ डैश जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। 1 minute। हेलो, आई थिंक आई हैड लॉ। ओके, एम आई ऑडिबल टू ऑल? आज थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है आई थिंक। एम आई ऑडिबल? हाँ, कनेक्ट ये प्रेजेंटेशन में दिख रहा है ना। ओके, आई रिपीट अगेन। तो ये हमने एफ डैश जेड तो फाइंड आउट कर दिया है, बट इट इज इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, इसको अब हमें जेड के टर्म्स में लाना है। सो फॉर दैट वी यूज अ रूल एंड दैट इज कॉल्ड एज मिलने थॉम्सन्स रूल। सो दीज आर द टू पीपल हु हैव गिवन अस दिस रूल to get f dash z in terms of z. Okay, what does this rule says? This rule says that if you have an analytic function in terms of x and y, you want to get it in terms of z, simply put x equal to z and y equal to 0. Okay, this can be used only for an analytic function, not for any other function। और यहाँ पर तो अपना function analytic है। Okay, तो by मिलने Thompson's rule, we put x equal to z and y equal to 0. So f dash z becomes 3z square minus 3 into 0 square plus 2 into 0 plus I into 6 into z into 0 minus 2 into z. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट एफ डैश जेड इक्वल टू 3z स्क्वायर, दिस बिकम 0, दिस बिकम 0, दिस बिकम 0, यहाँ मिलेगा सिर्फ माइनस 2z। सो दैट इज एफ डैश ऑफ z इक्वल टू 3z स्क्वायर माइनस I into 2z. So this is f dash z, that is the derivative of the function in terms of z. Did we understand this? ये टाइप 1 का प्रॉब्लम समझा, एनालिटिक कैसे प्रूव करना है और फिर एफ डैश ऑफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, गुड।
ऑल राइट, ओके, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इट इज ऑफ द सेम टाइप, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है देखो। प्रूव दैट f of z equal to sin z is analytic and find f dash z in terms of z। ओके, तो इसमें फर्क क्या है? पिछले प्रॉब्लम में द फंक्शन जो दिया था दैट वाज इन टर्म्स ऑफ x एंड y, एंड हियर द फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ z। ओके, तो अपना जो फंक्शन है इट इज इन टर्म्स ऑफ z। हेलो, फिर से आवाज ब्रेक हो रहा है, अभी क्लियर है? आशीष क्लियर है? हाँ, ओके। सो f of z is in terms of z, we need to get it in terms of x and y। क्यों उसको x and y के फॉर्म में लाना है? ऐसे z के टर्म्स में क्यों नहीं काम चला सकते? Why do we need to get it in terms of x and y? हम एनालिटिक कैसे चेक करेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव। वेरी गुड अमित, आकांक्षा। डिफरेंशिएट करना है, किसको डिफरेंशिएट करना है? आकांक्षा, किसको डिफरेंशिएट करना है? अमित, किसको डिफरेंशिएट करना है? डेरिवेटिव किसका निकालना है? आई मीन पार्शियल डेरिवेटिव साइन जेड का नहीं निकालना है। नहीं, साइन जेड का डेरिवेटिव नहीं निकालना है। Abhinav, this thing is right, but then why do I have to get it in terms of x and y? Why can't I continue with respect with in z? Akansha and Ashish had given the answer. Very good, Sanmeet. We want derivative of u and v with respect to x and y. Shubham, function बराबर है, लेकिन कौन सा function? When we are talking about complex function, there are three functions involved. एक f of z है, एक उस that is the पूरा का पूरा function, एक उसका रियल पार्ट है दैट इज u, और एक उसका इमेजिनरी पार्ट है v। तो हम तीन फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो आपको कौन सा फंक्शन आप बता रहे हो यहाँ पर? इट इज u एंड v। ओके, टू शो इट इज एनालिटिक हमें कॉशी रीमान इक्वेशंस फाइंड आउट करना, चेक करना है, राइट? कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड है या नहीं चेक करना है। कॉशी रीमान इक्वेशंस चेक करने के लिए ux, uy, vx, vy चाहिए, करेक्ट? सो उसके लिए u और v चाहिए, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अगर इसको ऐसे z के फॉर्म में रखेंगे, जो अभी u और v रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को आइडेंटिफाई करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? कौन हमें हेल्प करता है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को आइडेंटिफाई करने में? कैसे पता चलता है रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? किसको रेफरेंस में रख के हम फाइंड आउट, देख बराबर आई टर्म को रेफरेंस में रख के हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करते हैं। बट ऐसे साइन जेड के टर्म्स में लिखेंगे तो जो आई है वो जेड के अंदर छुपा है, करेक्ट नो? तो बाहर दिखाई नहीं दे रहा है, और जब तक हमें दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर किसी ने बहुत अच्छे से लिखा था देख के, भरत ने लिखा था देख के, करेक्ट ना? तो यहाँ पर अगर वो आई दिखेगा ही नहीं तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कैसे आइडेंटिफाई करें? तो उस आई को बाहर लाना होगा। तो बाहर कैसे लाएंगे? वी राइट जेड एज एक्स प्लस आई वाई। ओके, करेक्ट, यस खुशी। शुभम, ए प्लस आई बी नहीं यूज करते हैं हम, एक्स प्लस आई वाई यूज करते हैं। ओके, ए प्लस आई बी में कोई गलती नहीं है, बट देन ए एंड बी वी यूज इट फॉर कॉन्स्टेंट्स, और यहाँ पर वेरिएबल्स की बात हो रही है तो वी यूज एक्स एंड वाई। ओके, so we write this as sine of x plus iy। now we have to simplify this using sine of a plus b का formula। so it is sin a cos b plus cos a sin b। यहाँ पर a is x and b is iy। so when we use this formula we get sin x cos iy plus cos x sin iy। okay, y x plus iy। भरत, क्वेश्चन क्या है, नहीं समझा? यूज कर सकते हैं, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ हैबिट, आदत की बात है।
मतलब x प्लस आई वाई इतना जाना पहचाना नोटेशन है कि वो x प्लस आई वाई यूज करते ही सबको पता चल जाता है, हाँ ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, वो एक दिमाग में फिट हो गया है. यू कैन यूज m प्लस आई एन ऑल्सो, a प्लस आई बी भी यूज कर सकते हैं, c प्लस आई डी, p प्लस आई क्यू, कुछ भी यूज कर सकते हैं. ये जस्ट एक कॉमनली यूज्ड नोटेशन है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये कॉमनली यूज नोटेशन है. और अपने सिलेबस मैथ्स 3 के सिलेबस में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए x प्लस आई वाई ही यूज करना है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना है. ओके अपना जब कोई रिसर्च पेपर लिखोगे वहां पे अपना नोटेशन डिफाइन करो और लिखो, बट यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग इज z इक्वल टू x प्लस आई वाई विल बी द नोटेशन यूज्ड. ओके नाउ वी कम बैक टू दिस. sin x into cos आई वाई प्लस cos x into sin आई वाई. हमने ये सब कसरत हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू गेट आई आउटसाइड सो दैट इट कैन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. लेकिन अब ये आई कहाँ जाके छुपा है? ये देखो, ये कॉस फंक्शन के अंदर है, साइन फंक्शन के अंदर है, तो इसको बाहर निकालना है. इसका भी तरीका हमने सेमेस्टर 1 में देखा था, करेक्ट? रिलेशन बिटवीन circular and trigonometric function. Sine of I theta. I whenever there is I inside the sine function, this I will come out, और ये जब बाहर आएगा तो साइन क्या बन जाएगा? साइन हाइपरबोलिक थीटा. ओके कॉस, कॉस इज अ यू नो कॉस के अंदर जो भी आता है वो उसको खा जाता है. कॉस के अंदर माइनस रहता है तो कॉस माइनस को भी खा जाता है. कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा. कॉस के अंदर आई है तो कॉस उसको भी खा जाता है, बट आई ऐसे ही हजम नहीं होता है, इट चेंजेस कॉस इनटू कॉस हाइपरबोलिक. सो कॉस ऑफ आई थीटा इज कॉस हाइपरबोलिक आई थीटा. तो ये रिलेशन हमने सेम 1 में देखा था, वी यूज दैट हियर. सो वी गेट साइन एक्स into cos hyperbolic y plus cos x into sin of iy is I sin hyperbolic y. Okay, तो इसको ठीक से लिखेंगे तो we get sin x cos hyperbolic y plus I cos x sin hyperbolic y. तो ये I आ गया बाहर खुले मैदान में. Now we know which is the real part and which is the imaginary part. So now we can compare it with u plus iv. तो अपना रियल पार्ट u है sin x into cos hyperbolic y, एंड अपना इमेजिनरी पार्ट है जो i के साथ मल्टीप्लाइड है, दैट इज cos x into sin hyperbolic y. ओके पिछले प्रॉब्लम में डायरेक्टली x एंड y के फॉर्म में दिया था, तो ये u और v आइडेंटिफाई करना डायरेक्ट अपना स्टेप 1 था. तो इफ इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ z, then this is something that we have to do. Have we understood this? यहाँ तक समझा u और v कैसे मिला? Okay, now we move on to checking that the function is analytic. तो ये u और v मिल गया. Now we will show that the function is analytic. उसके लिए we need the 4 partial derivatives. Okay, Cauchy-Riemann equations check करना है ना, तो चारों partial derivatives चाहिए. तो ये रहा u का partial derivative with respect to x. तो sin x का derivative आएगा cos x, cos hyperbolic y will remain as it is. Okay, next derivative of u with respect to y. तो ये sin x will remain as it is. cos hyperbolic y का डेरिवेटिव है sin hyperbolic y. हाइपरबोलिक फंक्शन में डेरिवेटिव कैसा होता है? sin hyperbolic थीटा का डेरिवेटिव होता है cos hyperbolic थीटा, cos hyperbolic थीटा का डेरिवेटिव होता है sin hyperbolic थीटा. नो माइनस बिजनेस ओवर देयर. ओके सो cos hyperbolic y का डेरिवेटिव है sin hyperbolic y. नेक्स्ट vx, हियर v में ये cos x है, x वाला टर्म, तो इसका डेरिवेटिव है माइनस sin x. sin hyperbolic y will remain as it is. vy, तो v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y में this cos x will remain as it is, and sin hyperbolic y का डेरिवेटिव आएगा cos hyperbolic y. ओके तो ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए. नाउ वी हैव टू चेक ux को vy के साथ चेक करना है. चेक करो cos x cos hyperbolic y, cos x cos hyperbolic y, so these two are same. uy और vx को चेक करो, sin x sin hyperbolic y और ये माइनस sin x sin hyperbolic y, so these two are negatives of each other. तो uy equal to minus vx. ओके तो इसका मतलब है अपना Cauchy-Riemann equations are satisfied. तो f of z satisfies Cauchy-Riemann equation. The next condition
all the four partial derivatives, सारे चारों का denominator 1 है, तो they are continuous. Okay, so that means our f of z is analytic. Okay, ये वाला part सबको समझ में आया? First part, f of z is analytic. Yes, okay. Now we have to go for the second part. We have to find f dash of z in terms of z. अब यहाँ पर आप बोलोगे f of z हमें पता है sin z है, तो इसी को डायरेक्टली हम f dash z इक्वल टू cos z लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं, बट यहाँ पर we want to check whether you know the formula for finding f dash of z, whether you know मिलने थॉमसन्स रूल. इसके लिए यहाँ पर ये प्रोसीजर यूज करके ही करना. ओके, इफ यू से लेकिन f dash z इक्वल टू cos z भी तो करेक्ट है. yes it is correct, but the expected solution यहाँ पर जो है वो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है. ओके, so f dash z we use the formula ux plus ivx. ux है अपना cos x cos hyperbolic y, vx है अपना minus sin x sin hyperbolic y. तो ये सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये हमें मिल गया f dash of z in terms of x and y. इसको लाना है in terms of z. तो कैसे लाना है? by using मिलने थॉमसन्स रूल, that is put x equal to z and y equal to 0. So when you put x equal to z and y equal to 0 in this, we get f dash of z equal to cos z into cos hyperbolic 0 plus I into minus sin z into sin hyperbolic 0. अब cos hyperbolic 0 is 1, sin hyperbolic 0 is 0. ओके, ये साइन फंक्शन की साइन और कॉस की तरह साइन हाइपरबोलिक एंड कॉस हाइपरबोलिक भी बनता है. वी सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, सो वी गेट f dash z equal to cos hyperbolic z into 1, that will give us cos z into 1, that is cos z, and sin hyperbolic 0 is 0, so this entire thing becomes 0. तो ये हो गया f dash of z. Did we understand this problem? Okay, right now since the time is up, there is one more problem that we will take it up in the next lecture. Okay, so that is all for